the causeless mercy of Guru Pad Padma and desiring for their mercy and pay my unlimited obeisances into their lotus feet. We are listening to Venu-Gita Katha. We began, but there's a few shlokas left. Because we are moving around from one place to another, it's not in our good fortune to speak the Katha in one place. We're listening to Venu-Gita Katha. So Acharya Pad have told us about Krishna's 4 madhurya. So there's rupa-madhurya, lila-madhurya, prema-madhurya and venu-madhurya. So Acharya Pad have told us about these 4 sweetnesses of Krishna. So from Krishna's 64 qualities, and especially these 4 qualities of madhurya, are not in any other incarnation of Krishna. Even though Krishna's avatars are non-different from Krishna, however, but these 4 qualities of Krishna are not in any other incarnation of Krishna. What to say of demigods and demigoddesses, but not even human beings. So what to say of human beings, not even demigods and demigoddesses. Do you understand? These qualities are not, these 4 qualities are not possible in a human being. What qualities? Rupa-madhurya, Krishna's such a beautiful form. It's unparalleled, unique and unparalleled form. Rupa-madhurya. Lila-madhurya, his beautiful leelas, pastimes that he performs. Prema-madhurya, the manifestation of his love. It's impossible in human beings and demigods, yet also it's not possible in any of his incarnations, such as Ram avatar, the beautiful prema-madhurya. Jayadeva Gosvami, writing this, just gave up. He couldn't write it. Gita Govinda is such a high granth, high class granth that until we listen to this granth, until Jagannath Ji listens to Gita Govindam, he does not rest. Every night when Jagannath Ji goes to rest, then Jagannath listens to the entire Katha of Gita Govinda. And the Devdasis Kriya Mudra. This high level granth has never been in the past and it will never be in the future, such as this. Do you understand? If anyone wants to speak about Rasa Shastra, we'll have to read this granth. Gita Govinda Granth. Srimad Vyasadeva Goswami writes,
इतने सुंदर लोक में जयदेव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं. मैं केवल ये Jayadeva Goswami Pad writes such beautifully in this invocation shlok. गीत गोविंद में लिख रहे हैं, यदि हरि स्मरणे सरसंग मन. He's writing यदि this कोई in किसी के the मन को यदि Mangalacharan रस करना Shloka. चाहते हैं, रस में आप्लुत करना चाहते हैं, यदि हरि स्मरणे सरसंग मन. If यदि anybody विलास wants कलास कुतूहलम, यदि राधा गोविंद के विला कलास में, कला में, यदि किसी के सामान्य रूप में किसी यदि Radha and Govinda, इच्छा रहे, and if anybody has the उस desire, वस्तु के जाने के लिए कौतूहल, has a desire to know about the क्या करना art पड़ेगा? of मधुर कमल कांत कदा Radha and Krishna, what will they have to do? ये शुद्धा सरस्वती यानी राधा जी की जो प्रेम महिमा जो है, So this Shuddha Saraswati, और the उनकी प्राण कांत glories of Radha Rani, उसमें डूबना पड़ेगा. you have to मधुर कमल dive कांत into कदा बोले them. सुनो तदा जयदेव सरस्वती. जयदेव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, Jayadeva जिस Goswami ग्रंथ Pad के writes, वास्तव प्रणेता तो मैं नहीं हूँ, ये स्वयं शुद्धा सरस्वती स्वरूपिणी he's राधा saying, जी. I haven't written this Granth, but Shuddha आज Saraswati, कोई व्यक्ति ग्रंथ लिखते हैं, Radha अपने ji herself has क्रेडिट अपने written. लेते नहीं है. If anybody writes अपने गुरुजनों के anything, चरण में they don't take the credit themselves, उसे सांप की तरह लिखा रहता they है. actually ग्रंथ offer में it जो to कुछ the lotus feet of ये the ग्रंथ Guru, गुरु Pad, भगवान के Guru चरण में Varga, मैं अर्पित कर देता हूँ. and they write that उसी I प्रकार offer this to ये my गीत Guru गोविंद की Varga, ग्रंथ के ये प्रणेता जो है, to the Lord. माने लेखक जो है, In the same way, the जयदेव writer, गोस्वामी कह रहे हैं, Jayadeva Goswami, लेखक मैं नहीं. is saying, I'm not the writer. राधा जी की कृपा से ही शुद्धा This is सरस्वती, actually the direct उनकी कृपा से ही mercy of Radha Rani, Shuddha मैं इस Saraswati. ग्रंथ के जो है प्रकाशित कर रहा हूँ. That is the only way I've manifested this जिसमें Granth. लिख रहे हैं, स्मर गरल खंडन मम शिरसि मंडन देहि तो पद पल्लव मुदार. जयदेव गोस्वामी पाद ग्रंथ के लिखते लिखते Jayadeva जब राधा जी Goswami की Pad, मान when writing the Granth, की मनाने के लिए बारी आई, when it was ये कृष्ण time to break Radha राधा जी Rani's को मान maan, भंग करने के प्रयास करी, माने मनाने के मान Krishna प्रसाद was trying to break Radha Rani's मान को maan. दूर करने के लिए तब मानवती श्रीमती राधा जी के निकट कृष्ण यही करे, स्मर गरल खंडन. Then ये श्रीमती राधिका Krishna के is मान saying को this गरल माने बीच को to जो है Radha आप Rani, छोड़ दीजिए. please give up this maan. मार्ग स्मरणम देहि तो पद पल्लव मुदारम. हे उदार चित्त श्रीमती राधिके, मैं आपके चरण में अपने को सब कुछ समर्पित कर दिया. Krishna is saying to Radha Rani, who is saying this to Radha Rani? Krishna is saying, I offer myself to you, Radha Rani, चरण में मैं आपको स्थापित and कर to रहा your हूँ. तथापि lotus राधा जी feet. के मान भंग नहीं हो रहा है. राधा जी Even मान then, Radha नहीं Rani's छोड़ रहे. maan is not तब breaking. कृष्ण क्या बोले Then what और is आगे Krishna जयदेव saying? गोस्वामी पाद लिख नहीं पा रहे. And Jayadeva Goswami Pad is unable to write further what जयदेव Krishna गोस्वामी is आगे लिख saying. नहीं पा रहे. He's not able ये to पद को write. कैसे पूर्ण करूं? How shall I complete this verse? क्योंकि ये विचार हो रहे हैं, Because he's एक thinking ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कृष्ण के Brahma चरण and कमल में नतमस्तक से स्तव स्तुति the आदि करते हैं. demigods, they are और कृष्ण offering के their सिर पर obeisances into lotus कोई feet of पैदा करने Krishna. वाले कोई व्यक्ति है इसमें? And there is nobody who will कौन put सा? their feet on Krishna's head. इसलिए जयदेव गोस्वामी पाद यहीं पर अपने जो पेन को रख करके चले गए. That is why Jayadeva Goswami Pad left his स्नान pen करने के लिए गए. and went off to take bath in the river. ठीक उसी समय And at that time, कृष्ण जयदेव गोस्वामी पाद के रूप बना करके Krishna came in the form of Jayadeva Goswami. और जयदेव गोस्वामी की पत्नी And Jayadeva पद्मा जी Goswami, बोले, पद्मा his wife, एक Padma, किताब देना. मैं said, थोड़ा याद आ गया Krishna तो said, give me लिख करके मैं the जाता. book. Oh, I just remembered. Oh, let me write it down. पद्मा देवी पद्मावती Padma Devi, किताब Padmavati, दे दिया. she gave the book. वेशधारी कृष्ण And Krishna, who's in disguise, वो पद के लिखा नहीं he तो पद पल्लव मुदारम. ये उदार चित्त बोले श्रीमती राधिके, आप अपने चरण कमल जो है मेरे सिर Oh, पर hey, merciful Radharani, please रखे. put your lotus feet on my head. देखो लिख करके चले गए. कुछ समय के बाद
जयदेव गोस्वामी पाद जब स्नान करके लौट करके आए, at that time he left, and then Jayadeva Goswami returned from taking bath. And Padyavati spoke, "Oh, you only just took the book, and how come you came back so quickly after taking a bath?" And he said, "No, I've just arrived now, I've just come." She said, "No, but you came earlier and I gave you the book earlier." She said, "No to you, I gave you the book." Jayadeva Goswami said, "Yeah, Jayadeva Goswami said, I'm still thinking about how to complete this verse." She said, "No, I did. I gave it to you. You just wrote it." She said, "How?" He said, "No, I've just arrived now." "Okay, go and bring the book. Let me have a look." So Padyavati, she gave the book to Jayadeva Goswami. And Jayadeva Goswami saw in golden words, the verse is completed. Hey, Shrimati Radhika, please place your lotus feet on my head. And then Jayadeva Goswami said, "Padyavati, you are so fortunate. Your life is successful. You took darshan of Krishna. So, taking my form, Krishna came and took this book off you and wrote in it." मधुर रस के विचार और लेखक जो है जयदेव, with these sweet rasic thoughts, Jayadeva Goswami, और विशेष करके गुरु परंपरा में जितने भी देखा जाता है जयदेव गोस्वामी पाद के रसिक जैसे न भूतो न भविष्यति, they say there's no other rasic such as Jayadeva Goswami Pad. यदि वास्तव रूप में हृदय को सरस करना है, wants to रसावर करना है, रसावर समझ कर, to fill the heart mellows, रसगुल्ला बनाया जाता है, just as a rasgulla is made. Have you ever made a rasgulla? Do you know how it's made? टिक्की बनाते हैं गोल गोल करके, you make a tikki shape, make it round, फिर उसको तोलना पड़ता है, माने what is called, then you have to fry it, और उस then उसको सिरप में डालना पड़ता है, then you put it into syrup, और उसे कण 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 में, and then every particle, the juice will enter into the rasgulla. Isn't that so? है कि नहीं है? तो इसलिए करे यदि हरि स्मरणे सरसंग मानो, यदि किसी को यदि चित्त के यदि सरस करना है, भगवान श्री हरि यानी ऐसे जयदेव गोस्वामी पाद ये लीला को स्मरण करें, यदि हरि स्मरणे, we should listen to this Lila of Jayadeva Gosvami. यदि विलास कलास कुतूहलम, यदि राधा गोविंद की प्रेम कला में किसी के यदि सामान्य रूप में यदि उसके कौतूहल हो, माने क्यूरियोसिटी हो, if anybody has curiosity in Radha Govinda, ये राधा गोविंद की लीला कला विलास है क्या, in the art of the Lila, what is this actually? यदि सामान्य रूप में यदि किसी के यदि, if anybody wants to know, कौतूहल हो, कौतूहल समझने क्यूरियोसिटी, if anybody has curiosity, कम तो पदावली सुनो तो जयदेव सरस्वती, जयदेव गोस्वामी पाद करे, Jayadeva Goswami Pad is saying, only through Shuddha Saraswati, this Granth, this Lila Vilas of them meeting, Katha, listening to this. Do you understand? Vaisnavas speak so beautifully of this. We speak Bhagavad Katha. But what does it actually say before Bhagavad? This Shri. This Shri word, who wrote this?
Everywhere everybody जी says शब्द क्यों Bhagavad कहा? is happening. Why do you say Shri? ये भी रहस्य है। There is a secret behind this. हैं? एक बार की कथा है। There's a katha from one time वैष्णदेव गोस्वामी जो भागवत लिख दिया, पुराण लिखा गया। when Vyasadeva Gosvami wrote Bhagavad Puran. और लिखने के बाद After ये भागवत writing, लिखा हो ही गया। it was complete. मानो माने ग्रंथ लिखने के पहले उसे खसड़ा माने Before उसके writing पहले the ये लिखना Granth, पड़ता है, you have to write इंट्रोड्यूस करना the पड़ता introduction. है। चलो, तो ग्रंथ जब हो गया So when the Granth was written, तब व्यासदेव जी ने and then Vyasadeva बोले, नारायण के said बोले, to नारायण प्रभु Narayan, Prabhu, आपके बारे में तो ग्रंथ लिखा, I've written this Granth about you. आप थोड़ा इस ग्रंथ के जो है रिकमेंडेड कर दीजिए। Can you please recommend this Granth? तो उस समय नारायण बोले, मैं क्या At that करूं? time Narayan said, चलो, बोले घर में जो कुछ भी करना है whatever I तो do in पूछ the करके करना house, पड़ता है ना, have to किससे पूछ करके ask करना पड़ता है? before anything is done. सेठानी को, Have to सेठ जो ask कुछ भी करता है the सेठानी के ही Sethani, so my wife. पूछ करके करना पड़ता है, नहीं So तो the सेठानी Seth- बिगड़ जाए तो हो जाएगा, रोटी नहीं मिलेगी। So the boss, he has to ask तो बोले, his wife first. अच्छा वैसे थोड़ा समय रुको, Said, मैं okay, अपने सेठानी से पूछ Vyasadeva, लेता let me go and ask my हूँ। wife. भाई जो कुछ साइन फाइन करना है, जो कहता है सब कुछ तो Whatever you need to सेठानी के sign. ऊपर ही करते हैं ना, etc. क्योंकि पैसा तो सारी चाबी काठी किसके पास रहता है? So who has all the Sethani money? के पास। Sethani and the सेठ जी keys. के She पास, has सेठ जी तक कमाता है पैसा, Seth, she earns the money, दुकान में बैठते हैं, बस जहाँ पर sits है in the पैसे shop, कमा करके earns किसको the दे money, देती है? but gives it to his सेठानी wife, को दे देती है। Sethani. और सेठानी कहाँ रखती है? And where does the Sethani put तिजोरी it? में रखते हैं। In पहले the तो बैंक safe. बैलेंस नहीं था, There never used to be bank accounts. आजकल सब कुछ क्या बोले, Now बैंक ट्रांसफर है, everything is done by bank जो transfer. कुछ भी है Everything there is. सेठानी का नहीं दे रहे सब, No, it's not given to सेठानी के नहीं दे Sethani. रहे, यही आप बता रहे हो। Oh, she's देखो ये saying, पकड़ लिया ना, oh, I've caught you now. वो अपने आप बैंक में चले जाते हैं। Oh, there you go, automatically into the bank account. चेक करती है, स्टेटमेंट चेक करती है। हाँ, सेठानी भी कम नहीं है, सब और बैंक पे जो चेक है Even the ना, सब सेठानी Sethani, चेक करती है। she's clever. She checks चलो। everything in the bank account. हाँ, ये पकड़ लिया सबसे पहले से। Oh, caught you अरे now. जब से बैंक आ गया, Ever since सेठानी के the पास नहीं आ रही bank है, has तो come, किसके पास जा रहे हैं? सब बैंक। the money's अच्छा, not चलो। coming to the Sethani, it's going straight to the bank now. इसलिए सेठ के समय नहीं रहता ना, बैंक में कितने पैसे आया गया सब कहते हैं, Seth सेठानी doesn't have तुम सब कुछ देखो। To check दुकान what's पर मैं coming in बैठूं, and ये out, कम so the करूँ ना, Sethani is बैंक checking everything. चेकिंग करो, तुम ऐसे करो, इसलिए वो एक ही बात है। It's the same बैंक thing. में रखो If you और put it in the bank or in the safe, तिजोरी में रखो, वो एक ही बात it's the होता है। same आजकल thing. हो गया क्या, बैंक हो गया, Nowadays, उस समय के there's जकाल जो banks. था वो तिजोरी में रखते हैं। In those times, they used to put them in safe. हाँ। It's the same चलो। thing. वो नारायण बोले, Narayan समय said, बैठो, मैं अपने take- सेठानी से पूछ लेता हूँ। Sit लेकिन down, फाइन जहाँ करना Narayan, है, अभी कहीं करना है, निगरान and कोई I पता will है। go and ask my wife. सेठानी के पूछ ले, सेठानी के पास गया था, राधा So he जी के went पास। to Radha ji. राधा जी बोली, Radha ji said, बोले तुम्हारी काम है, हमें क्यों कहे, हमारे तो नाम नहीं है ग्रंथ में, he's saying, this is your work. Why my हम name's क्यों not लिखें? in this तुम जो करना है करो। Granth. So if you want to do Narayan anything, बोले, you बात write. तो Why सही should है। I write in it? So Narayan said, yeah, you're right. उनका ही नाम नहीं है, संपत्ति तो सब तुम्हारी है। She said, the wealth सेठानी is all बोले, राधा yours. जी बोली, भाई ये ग्रंथ जो संपत्ति है तुम्हारी तो है, She's saying, all the wealth is yours to तुम Narayan. जानो, You और वो know, लिखने वाले जो वो and जाने, whoever's हमें writing क्यों पूछ रहे it, why are you asking me? अरे नहीं आप बताओ, So no, you अरे tell. तुम बिगड़ जाओ तो काम तो नहीं होगा आगे। If you're unhappy, तो then we नारायण won't be आकर able के बोले, to वैष्णवी के बोले, continue with the वैष्णवी काम work. करो। And then इसमें Narayan came सेठानी back के and नाम लिख दो। told Vyasadeva, write down हैं? my wife's name. on वैष्णवी this. ने आकर के अब Write चलो सब कुछ तो Sethani's name. लिखा, ये तो छोड़ दिया और श्री So- लिख देता हूँ। क्या Vyasadeva लिख said, दिया? oh, okay, श्रीमद् I'll write Shri. So Srimad Bhagavatam, Srimad हैं? Bhagavatam ki हो गया jai. ना? So it's done. पूरा हो गया। श्री So शब्द it's का complete सर्वलक्ष्मी now. श्रीमती राधिका, Shri means Sarva Lakshmi सर्वलक्ष्मी Srimati. श्रीमती राधिका। Radhika. राधा प्रसन्न हो गया, बोले ठीक है, So Radha आप Rani उसमें is happy. साइन कर दो।
He said, okay, now you can sign this. राधा जी अनुमति दे दिया. So Radha ji gave permission to Narayan. अब इसको साइन कर दो. Now you can sign बोलो it. वृंदावन विहारी Lila Laki Jai. जय जय श्री राधे. है कि नहीं? इसलिए श्रीमद् भागवत में हम लोग जो करते हैं श्रीमद् भागवतम क्या बोलते हैं? So that's why we say Srimad Bhagavatam. लोग कहते हैं भागवत में राधा जी नाम नहीं है. People say Radha ji's name is not in Bhagavad. जिसके आँख है वो देख लेते हैं, जिसको आँख नहीं है it's at the beginning. The ones those that have eyes, they can see it, but the ones that don't, जिसको they आँख don't see नहीं है it. ना वो ऊपर से. So the ones that don't have eyes, they're just looking up. ऊपर कुछ कहते हैं कोड़ी काड़ी जमते हो. Do you know what kori kori is? वो आप लोग के तो ये तो घर है ना जो लकड़ी का घर होता है ना बीच में houses made of wood. लंबी एक एरिया है उसके कड़ी कहते हैं. They have a beam in the middle of हिंदी में them. क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोले बीम बोलते हैं. बीम दिया नहीं किंतु उसके कड़ी कहा जाता है. In English it said beam. मोटे मोटे लोहे क्या बोले वो. It's really big wooden beam in the center. वो इस तरह से इस तरह देते हैं. वो सीलिंग पर ये रखा रहता है. For the ceiling, it's from one end to the बाबू जी other. ठीक करो कि नहीं कर? हाँ. ये लोग नया लोग ये लोग को पता ही नहीं है. These people don't. ये लोग देखे ही नहीं है. They've never seen. अरे इंडिया में नहीं जो लकड़ी के जो घर होता है. It's in those houses made of उसके wood. बीच बीच में वो दिया जाता है. In the middle, there's a. बीम दिया जाता है. अरे इंग्लिश में बीम बोलते हैं तो. किंतु उसके कड़ी बोलते. कड़ी का. It's called a kori. जैसे समझ में आ जाए बस इतना ही होता है. Just understand what I'm trying to say. जिसको आँख नहीं है वो तो ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं. So those that don't have eyes, they will just keep नीचे तो दिखाई नहीं looking up. पड़ता ऐसे कुछ. तो श्रीमद् भागवत में इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम. श्रीमने Srimad Bhagavatam. श्रीमती राधा रानी. स्पष्ट हो गया ना? Radha Rani. लोग कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं है. तुम तो बोलो भागवत बोलो श्रीमद् भागवतम बोले ना. श्रीमद् भागवतम. If you say Srimad Bhagavatam, that's Radha Rani. सर्व संपदा श्रीमद् भागवतम. सर्व संपदा किसकी? बोले श्रीमती राधा जी की का. इसलिए श्री शब्द की अर्थ होता है सर्व लक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका. श्रीमती राधिका. मत माने युक्त अनेक अर्थ होता है. सिनोनिम होता है. इससे अनेक प्रकार जो है गुण संपन्न होता है. तब इसके मत शब्द मत शब्द जो प्रयोग होता है संस्कृत में इसके अनेक जो है गुण होता है. जिसमें it means that one that has many qualities. Srimad. अर्थात सर्व संपदा समस्त संपद को देने वाले कौन है? So the one that gives wealth, आगे की कथा सुना तो all types of wealth. Who's that? Srimati Radhika. And as we move on to Katha, so Radha ji was happy. राधा जी के नाम बोले कहते हैं तुम्हारे नाम Radha ji's name बोले राधा जी के नाम कैसे आ गए? at the beginning. कहते हैं श्रीमद् भागवत. जो कोई That's कहते why हैं we जो say कहते हैं Srimad भागवत में Bhagavatam. राधा जी के नाम नहीं है. So those that say Radha ji's name is not in पहली the तो है Bhagavatam. It's at the राधा जी के beginning. बिना कृष्ण आधा ही बन जाता है. Without Radha, Krishna is half. राधा के बिना कृष्ण आधा बन. Without Radha, Krishna is half. है कि नहीं बताओ? Isn't that the राधा case? जी के नाम हम कहते हैं. That's why we say Radha हमारे ji's हिंदू name. शास्त्र में जितने भी है In our Hindu क्या scriptures, बोलते हैं? what do we कृष्ण say? राधा नहीं कोई बोलते. क्या Nobody बोलते हैं? says Krishna Radha. राधा कृष्ण. We all say Radha Krishna. सीताराम बोलते हैं. राम सीता थोड़ी बोलते हैं. Sitaram, क्या not बोलते हैं? Ram Sita. सीताराम सीताराम हम बोलते Sitaram, हैं. Sitaram. ये बोलते हैं शिव पार्वती. Shiv Parvati. वो दूसरी कथा. शिव जी तो That's a भगवान नहीं है different. ना. That's a different katha. जो Shiv is not भगवत तत्व जो Bhagavan. है, उसको लक्ष्मी भगवत नारायण तत्व. बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Lakshmi Narayan. सीताराम. सीताराम, जितने लक्ष्मी भगवत तत्व नारायण. होता है ना, It's all भगवत Bhagavad तत्व Tattva. बोलने के लिए पहले शक्ति क्या पहले So the Shakti's name is said first. लक्ष्मी निसिंह. Lakshmi निसिंह Nrsimha. और लक्ष्मी ऐसे नहीं बोला जाता है. Nobody says Nrsimha क्या बोला Lakshmi. जाता है? What do they लक्ष्मी say? नृसिंह. Lakshmi जितने भी Nrsimha. भगवत तत्व जो है आप उनके नाम Whatever देखो. Bhagavad Tattva there is, आप look at the brain के लगाओ. names. Use your brain. आज समझिए. जहाँ पर Understand? भगवत तत्व आएगा The Bhagavad सबके Tattva, नाम पहले they'll always have शक्ति के नाम आ जाता है. the इसके बाद name of शक्तिमान Shakti के नाम. first. बोलो वृंदावन बिहारी. Hari Lal Ki Jai. आइए हम जिस कथा को
कथा वर्णन कर रहे थे। And the katha that we're speaking of. ये वेणु तत्व के बारे में वेनु-माधुरी, हम जो माधुरिमा जो बोल रहे हैं, चार speaking माधुरिमा about जो है, the sweetnesses, the four कृष्ण छोड़ करके sweetnesses, और किसी and अवतार में भी नहीं है। it's not in any other avatar apart from Krishna. It's not possible in humans. देवता लोग कहा जाता है, देवता में भी संभव It's not possible in demigods, above demigods. शिव जी है, Shivji, it's not possible in शिव जी Shivji. के ऊपर को देखा वैकुंठ Above में नारायण, Shivji, there's Vaikuntha, there's Narayan, Lakshmi वो भी Narayan. संभव नहीं। It's not possible there. सीताराम के भी संभव नहीं। Sitaram, it's not possible. और उसके ऊपर जो महिषी And above आदि them, है, उनके भी the संभव नहीं। रुक्मिणी, Mahishis, सत्यभामा आदि Rukmini, ऐसे जी। Satyabhama. So, It's not possible for them. महिषियाँ जो है उनके भी संभव नहीं। The queens of Dwarka, it's not केवल possible for गोलोक them. वृंदावन में राधा कृष्ण की महिमा वर्णन की जा रही है। It's where in Golok Vrindavan, तो the कृष्ण के इतने the सुंदर जो glories of रूप Radha वर्णन Krishna. करे, चार मधुर 64 गुणों के द्वारा From the 64 qualities, कृष्ण की महिमा वर्णन हो रही है। इतने सुंदर रूप the four ये qualities. चार जो गुण जो बताया, रूप-माधुरी, Rupa-madhurya, लीला-माधुरी, lila-madhurya, प्रेमा-माधुरी और prema-madhurya, वेनु-माधुरी। venu-madhurya. अभी जो हम कथा जो श्रवण कर रहे हैं, The katha that we're listening ये to at the वेनु-माधुरी moment, की कथा श्रवण, we are listening about venu-madhurya. क्योंकि कृष्ण की परिचय किसमें होता है? Because Krishna's instruction is done through two एक objects. वेनु की और दूसरी One with his flute and one with यदि the कृष्ण peacock के हाथ feather. में वेनु नहीं हो If Krishna doesn't have the venu, the flute, और उनके मोर पंखा नहीं हो, and he doesn't have गोपियां उन्हें आदर नहीं करती। the peacock feather, then the gopis don't really कृष्ण के जो कुछ भी respect. संपद, जो कुछ भी दिखाई जाता है, रूप आदि कृष्ण के जो कुछ भी हम वर्णन करते हैं, Whatever we speak about, सिर पर मोर पंखा रहना चाहिए, Krishna has a peacock feather on his head and the हाथ flute पर in his hand. ऐसे वेनु, और ये Such a लेने से beautiful कृष्ण क्या अपने आप त्रिभंग ललित हो जाता है। And then Krishna takes this and becomes a three-band fold कृष्ण की himself. जितने भी लीलाएं जो है, अवतार आदि जो है, All of the Krishna's leelas or और avatars, किसी अवतार में ऐसी सुंदर रूप देखा नहीं जाता। no other avatar has this beautiful form, Tribhanga इतना Lalit सुंदर form. जो रूप है, It is so, और so मोर पंखा धारण beautiful. करते हुए And taking the और peacock त्रिभंग ललित feather, होकर के जो वेणु बजाते हैं, उसके क्या or होता है? in its Tribhanga Lalit form, he's playing the flute. What can you say? It's so beautiful. आंखों की फल क्या है? What is ऐसे the सुंदर fruit कृष्ण of के our त्रिभंग eyes? ललित रूप दर्शन कर छोड़कर कोई रूप है? To take अपचंता darshan फलमिदं न of Krishna's परम Tribhanga विदाम Lalit सत्वं form. कृष्ण जब सखाओं के साथ गोचारण करने When के लिए Krishna जाते goes हैं, cowherding with इतने the सुंदर sakhas, त्रिभंग ललित होकर के सबकी जो है चितवन के चुराते हुए he steals everyone's hearts सभी की चित्त with his का हरण Tribhanga करते Lalit form, and he, अब मन नमस्कार with his करते हुए ऐसे सुंदर merciful वेणुवादन आदि sidelong glance, वो रूप कौन वर्णन करे? he steals their hearts. How can you even explain this form? It's so beautiful. इसलिए कृष्ण की इतने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं, So जितना हम कथा श्रवण कर रहे हैं। the more we are speaking, इसलिए गोपियां की बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे कई दिन जावत। we were listening about the gopis for many days. ये गोपियां जब बड़ी हो गई, When the gopis were older, तब उनकी परिवार के जन जो सब कहने लगे, then their family देखो तुम लोग members थोड़ी started बड़ी to हो गई। say, "You're older now. क्या बोलते हैं? सियाना हो गया ना? Yes, you're older. Siana, intelligent. You're older now." ये अभी बालक के साथ खेलकूद करे और बालिका के साथ खेलकूद करे। So the boys, they play with the boys, and the girls, they play with the girls. You're not to play with each other, so not mixed. कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, नियम यहाँ पर संहिता लागू हो जाता है। So you have to abide by the rules here. पाश्चात्य देशों में तो सब मिक्स है, किंतु And the younger, they're mixed. संस्कृत संहिता में Western, it's all mixed. नियम कानून चलता But in रहता है। Indian देखो, culture, it's नियम पालन करना you पड़ेगा। have to abide by the rules. है, तुम लोग बड़ी हो गई, You're older now, so लड़के के साथ खेलकूद करो, girls play with girls, whatever you want to do.
sitting, playing, walking, talking. You play with girls, and the boys will play with the boys. So the gopis have this this spontaneous nitya siddha, this eternal love for Krishna. And what happened by listening to this, the gopis felt a deep amount of separation. Whatever activities the gopis do, it's all for Krishna. The gopis don't know anything but Krishna. Their hearts, their minds, their bodies, everything for Krishna. Sahaj siddha prem they have towards Krishna. It's not external. Just as fire and the I think it's burning power, Daiva Shakti. It's never separate from the fire. So, in the same way, as like in ice, the coolness is there and it's not separate. In the same way, the love and the relationship they have with Krishna is eternal, nitya siddha. It's not external. It's eternal. So the relationship that you have in this material world is temporary. Just as we say, this is my mother, this is my father. The relationship that we have with our mother and father is until we have this body. And when we leave our body, then that relationship will end. The only eternal relationship we have is of our soul with the Lord. Any relationships we have in this world. Do you understand this one? So those relationships have come and they will go. Do you understand? They've just come. It wasn't there before. It's come. And after some time it will go. Understand? Just as we say, this is my mother, my father, my brother, my friend. As soon as we receive this body, only since then I've been saying mother to this person. I never said mother before this. So many people I've called mother, and many lives have passed. And this is how we're wandering again and again. I'm saying this is my house. One day this house will not be, it will go. Yesterday I gave the example. Got a job as a district manager. Magistrate. And what the government does gives them a house, a bungalow, a big house, 8-10 cars, security guard for them. Even the land of the bungalow. They have about 8-10 gardeners to plant flowers in the ground. So the DM is saying, oh, put this flower, plant this flower here, do this, do that. So that time he becomes the owner. The DM, district magistrate, becomes the owner of that place. Then after 5 years, a couple of years,
what happens? ट्रांसफर हो जाता He है, is transferred. ट्रांसफर हो जाता है कि नहीं होता है? He's transferred, सब उनको isn't he? दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, Then he वही goes जो to है some other बगीचा place. और जो कुछ भी वहीं पर रह जाता है, Then everything is फिर left उसके there. दूसरे स्थान पर जाना जाता है, And then he has to go बोलो somewhere ना बन else. गया। वो 2 साल के लिए 5 साल के लिए उस स्थान For को 2 years, for 5 मालिक years, बन गया था। he was the owner of that जो काम place. करने वाला है उसको कहता है, ये So बगीचे में those तो people ये that काम were नहीं किया, वो working there, फूल he नहीं was किया, ये saying, मेरा, oh, you मेरा, haven't मेरा, done मैं, this, मैं, you मैं, haven't. मैं करते रहता He's saying, this is mine, this is mine. करते कि नहीं करते? He's doing that, isn't सबके he? शासन करते रहते। He's chastising everyone. और जब ट्रांसफर हो जाता है, But when he's transferred, क्या करते हैं? what happens? सब कुछ यहीं पर रख जाते हैं। So everything एक is कनाकुड़ी left में से there. लेना, He doesn't take फिर anything with दूसरी him. जब डीएम आएगा, वो कहेंगे हमारा है। Then when the next DM will come to that place, then वो he'll जो say, देने, I'm क्योंकि ये सब DM. सरकारी संपत्ति है ना उसका। This is actually the wealth of the government, isn't it? और फिर रिटायर हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। So when he's retired, he gets nothing. जब वो डीएम पद से जब When he's रिटायर हो जाता है, retired from the post of अवसर प्राप्त हो DM, जाता है, कौन पूछता है उसको? nobody asks after एक him. व्यक्ति जब When a अपने person पद में रहता है, is in his position, post, पोजीशन में रहता है, सब उसके ही सब आदर करते रहते then हैं, everybody और उस respect पद के द्वारा him. वो भी अपने को And he अभिमान करते, बड़ा अभिमान करते रहते हैं। has सारी है। a lot of ego प्रभु when का he's पाई in मत that खान, post. खाई को ना होई। जिसको पद आ जाता है, When उसको somebody अभिमान has a आ जाता है। position, he gets ego. This is बात ऐसे ही कर रही है। natural. It's और पद like- हट जाए, And when the post पोजीशन हट position जाए, is कौन पूछता है उसको? removed, nobody asks इतना after आदर him. नहीं होता है। Nobody respects. They don't respect that much. तो उसी प्रकार So in the same way, हम लोग के इस संसार में, बद्ध जीव के संसार में जो In संबंध this जो है, ये जो world, कहा जाता है टेम्पोररी कहा जाता है, our relationships are temporary. हैं? हम नहीं करें ये संबंध, झूठ है, नहीं कहते। I'm not saying it's अद्वैतवादी मायावादी कहते हैं ये सब झूठ है false. संबंध, So this is what the तो हम झूठ नहीं Mayavadis करें। say. They say it's हम false. मिथ्या नहीं करें। We're not हम saying it's क्या a कहते false हैं, वैष्णव relationship. लोग क्या कहते हैं? What do ये Vaisnavas say? संबंध क्या है? We say this relationship is कुछ temporary. समय के लिए। It's only हम for नहीं a कहते मेरा short time, मेरा पिता नहीं है, for some time. हम कहें We मेरा don't say पिता this is है not my और father. We इस जन्म say के मेरा पिता है। this is my father, but माने for इस this शरीर के साथ life. संबंध होने के नाते So the relationship उनको is मैं पिता with रूप this में मैं उनको संबोधन कर रहा हूँ, body, संबंध। and that's how थोड़ा I'm calling him my समझना, father. तत्व सिद्धांत को। इस शरीर के साथ With this body, संबंध होने के नाते with मैं our उनको पिता कह relationship, करके I'm calling him as my father संबोधन कर रहा हूँ। because we have that फिर मैं relationship. इस शरीर छोड़ जाऊँ, दूसरी घर में जन्म लेता हूँ, And then when I मैं दूसरे को मैं क्या leave this करता हूँ? body and take birth in another house, इस then I घर call को छोड़ somebody else करके मैं father. दूसरी घर में जन्म लिया, देखो, So if I leave this and leave this बिल्कुल। house and take birth in another house, और इसी घर में मैं जन्म in लिया, the next door तो house, फिर उनको क्या कहता हूँ? then what will I say? उसके माता पिता का ये And I माता will पिता say they're my mother and father, and then this mother and father, I will leave इनके them. जितने भी संबंध है, जितने भी जो All the कुछ है, इनके relationships. साथ मेरे कोई नहीं रहता है। There's और no सबको हम relationship भूल भी left जाते हैं। then with यदि this. जाति स्मरण भी हो, पूर्व जन्म के And जिसके even if स्मरण you रहता remember है, your previous तब भी वो life, पूर्व माता पिता उनको then the previous mother and father will not स्वीकार नहीं करना चाहिए। accept them. देंगे, No, will they give anything? जिस घर में तुम जन्म लिया वही माता पिता, और Only उस the संपत्ति house के that तुम you took अधिकारी birth in. बनोगे। इस संपत्ति के तुम Then you अधिकारी will have the देखो। हम इसे qualification करें, गौरी to वैष्णव के सिद्धांत जो है, taking झूठ नहीं कहा जाता, wealth मिथ्या of नहीं that कहा house जाता। only. Vaishnavas, we अद्वैतवादी don't लोग say कहते it's सब झूठ false. है, The Advaitavadis say मिथ्या this is है, all मिथ्या अभिमान। false. हम लोग का वैष्णव सिद्धांत कहते हैं ना, In मिथ्या Vaishnava अभिमान नहीं, philosophy, we don't say ये it's तात्कालिक false. सत्य है, We just कुछ say it's समय तक सत्य है। temporary. It's for some time. This is true. आज ये पेड़ है, पेड़ सत्य है कि नहीं? So आप देख this tree is here. It's और the पेड़ truth. जब It's सूख जाता here. है, But when it's dried, तो हम उसको a पेड़ नहीं tree, कहा जाता, we don't call it a tree. लकड़ी कहा रहे उसको, We call it नाम भी wood. बदल देते हैं। The name changes. बात ऐसे ही है कि नहीं? Is this correct? चलो, किंतु अभी हम कथा के जो कथा हम चल रहे हैं, So the katha गोपियों that के we're साथ saying कृष्ण की now, जो संबंध जो है, the relationship that the प्रेम gopis have संबंध with Krishna, है। it's an eternal relationship they have with सहजात, Krishna. गोपियों की सहजात संबंध कहा जाता है। जिस प्रकार अग्नि और अग्नि के दाही कह सकते, इस प्रकार नित्य संबंध है, So such as और उसे fire पृथक and करना its संभव नहीं होता है।
its Shakti, its power. In the same way, it's eternal. So the gopis have this eternal relationship with Krishna. किंतु देखो माता पिता ने क्या किया? So what did mother and father say of the gopis? दोनों के अलग कर दिया. They separated them. They separated the gopis from Krishna. तो गोपियों की कृष्ण के प्रति जो संबंध जो है अर्थात कृष्ण से नहीं मिलने पर they have with Krishna, the gopis felt deep separation in their hearts. जिसके पूर्व-राग रूप में हम वर्णन हो रहे हैं. We speak about this as purva-raga. विरह चार प्रकार के. There's 4 types of viraha. One is purva-raga, maan, pravasa, and prema-madhurya. याद रखना. Remember this. मिलन भी उसी प्रकार ही है. Milan is in the प्रकार के same मिलन way, meeting. संभव कहा जाता है. So there's 4 types of meeting. संकीर्ण, Sankirna, Sankirta, और संपूर्ण समृद्धमान prem. ये समस्त जो विचार आचार्य बाद ने दिखा. This is what Acharya have written. This viraha, purva-raga katha, Srimad Goswami speaks about this in Venu-Gita, the introduction of it. The gopis, कृष्ण से बिछोड़ होने के नाते, after separating from Krishna, the gopis are sitting in their house, sitting with their friends, their sakhis. They are discussing Krishna, rupa, his lila, and about his flute. And they're saying we can't meet with Govinda. But we can speak of Govinda's katha. So what the gopis with their sakhis, they were speaking Kirtan about Krishna's roop, his qualities, his lila, and this is called Mahabhav. They are lamenting in the separation with Krishna. This Mahabhav Acharya Pad have written that what is the state of Mahabhav, Prem, Sneha, Madanaka, Mahabhav. This is a platform of each for Prem, a stage for each. For Prem, just as milk is one, but as much as we keep, the more we boil it, so it's the same thing, it's milk, but the more it condenses, it has different names, doesn't it? Do you understand? In the same way, the love, as it condenses, the love. This is all katha of the transcendental world, not of this world. We're just listening as we perform bhajan. It will actually manifest in our hearts. And then when you go to eternal Goloka Vrindavan, then you will see, and then you will have the experience. And so as you listen, it will manifest in your heart. So you will be away from worldly material things, and then you'll start to experience, realizations will come. We're listening about the gopis speaking about Govinda. When Krishna goes herding the cows, how beautiful his form is. He has such a beautiful form. Speaking about where are the gopis sitting? They are sitting in their homes,
And with the और कृष्ण mood के ऐसे there रूप of का दर्शन करके their एक eyes, सखी दूसरे सखी के निकट they are speaking with one वर्णन another, कर रही the Sakhis. जिस प्रकार हस्तिनापुर में Just as in Hastinapur, धृतराष्ट्र के निकट संजय बैठ near करके Dhritarashtra, और बहुत Sanjay दूर was speaking कुरुक्षेत्र में about the Kurukshetra, पांडव और कौरवों के Pandava and जो Kaurava, युद्ध की जो परिस्थिति the है कैसी war है that took उसके जैसे place, वर्णन what कर was happening. व्यास He was प्रसादीन speaking व्यासदेव के कृपा से संजय with the mercy दिव्य दृष्टि से from देख करके Vyasadeva. Sanjay had धृतराष्ट्र की कहा Divya Drishti, so he could actually see what was happening. भगवद गीता में ही पहली कहा दिया So this was said in the Bhagavad Gita at the beginning, when Dhritarashtra asks the first shloka of Bhagavad Gita. मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय ये संजय तुम मुझे बताओ Hey मेरे Sanjay, पुत्र tell me, और पांडु के जो पुत्र आदि my sons or धर्मक्षेत्र Pandavas, में कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल Dharamkshetra, में एकत्रित होकर के वो लोग क्या they कर रहे are हैं together. क्या कर रहे हैं What are they doing? मुझे सुनाओ Tell me. देखो तो संजय सारी कथा उनको सुनाने लगे So Sanjay tells him the whole katha ठीक उस माने इसलिए with मैं कर रहा हूँ his गोपियाँ internal गृह में बैठी Divya हैं Drishti, और कृष्ण transcendental vision. गोचारण के लिए चल पड़े अपने सखाओं के साथ Krishna goes for cow herding with उस his समय कृष्ण की जो friends, सुंदर रूप कैसे his sakhas. ये गोपियाँ एक दूसरे को At that किसी time, कट his beautiful form, the gopis are बोले कैसे speaking of ये this. लोग भी साक्षात रूप में दर्शन कर How? Because they are directly इसमें कोई actually संदेह नहीं है taking, they वैष्णव are की seeing कृपा this से यदि form. संजय इतने दूर वस्तु के देख करके वर्णन कर So if- सकते हैं और गोपियों के लिए तो Through Vyasadeva, if Sanjay can actually बड़ी बात है। see through transcendental vision understand? and speak to Dhritarashtra, then this is no गोपियों के लिए big कोई deal बड़ी for the बात नहीं है। gopis. तो गोपियां देखो भाव नेत्र से So with their उसके देख करके वर्णन the कर mood of their देख कर transcendental देख eyes, बोलते बोलते they बेचारा भाव में gopis इतनी तन्मय हो जाती है are so कब absorbed, क्या बोलती है वो सीरियल नहीं बोल नहीं पा रही they're not able to speak इन सीक्वेंस in they cannot sequence. speak इतना तक भी कहते कहते They are अपने सखियों के also माँ कहकर के संबोधन भी calling कर दिए each other mother, the Sakhis they're calling. भागवत में आ रहे श्लोक In the Bhagavatam, there's this verse. प्रायो बतम्ब वियोगो वृंदावने उसमें गोपियां एक गोपी दूसरे गोपी One gopi is saying to the other माँ gopi, कहकर के उनके संबोधन कर calling them mother. रसशास्त्र में In Rasa Shastra, इसमें रसाभास दूर से आ जाता है this किंतु is गोपियां इतने Rasabhas. प्रेम में डूब गए But the gopis are so बोलते बोलते absorbed, and when they're एक speaking, सखी दूसरे सखी के they're क्या बोल करके calling each other माँ a कह करके Sakhi, from one Sakhi to another, they're संबोधन calling each करके other प्रायो mother. अम्ब शब्द आ गया उसमें प्रायो बतम्ब वियोगा वृंदावने उसमें तो गोपियां देखो एक एक करके वर्णन करने लगे The gopis ये are कृष्ण की speaking one कैसे by सुंदर one रूप about Krishna's और beautiful कृष्ण की form, मुखसिद्धनी सुन करके about how when he बछड़ा, his flute, how छोटे छोटे बछड़ा the भी calf, the घास small calf, माँ के थन से दूध पान कर रहे थे इतने समय गोविंद के वेणुध्वनि सुना और सुनते ही वो milk बछड़ा from its दूध mother. पान And as soon as he पीना heard बंद कर the flute, the sound of the flute of Govinda, गाय he के थन से stopped जो दूध drinking, झर रही है and the क्योंकि milk is उनके still falling from मुंह the से udder, टपक टपक के निकालने लगे but it's दूध all नहीं falling पाया। out गोविंद के इतने of the सुंदर रूप calf's और जो mouth, वेणुध्वनि and the beautiful form of Govinda and his sound of his और beautiful गायों की दशा flute. भी वर्णन कर दिया So they're speaking about the state of the वृंदावन की cows. गायों की कैसे Look at the state of the cows in Vrindavan. गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही As soon as they hear गाय जो घास खा रही थी the flute, the sound of the flute, and they're eating, the cows are eating grass, घास खाना बंद कर दिया they stop eating grass. कुछ घास जो है गायों के मुख में चला गया और कुछ बाहर है Some grass is outside and क्योंकि some is in गोविंद their की ऐसे mouths. सुंदर रूप और वेणुध्वनि सुन करके This is गायों के अगर गोविंद के beautiful. रूप दर्शन करने As soon as they hear the sound of the beautiful flute of और उनके Govinda, कान बिल्कुल खड़े हो गए their ears are standing up. आज गोविंद की वेणुध्वनि The sound of the flute, सुनने के लिए अमृत जैसे just जामुन listening, such as nectar. जैसे गायों की कान मानो सुंदर दोने के भांति ears. दोना जानते हो जिसमें
मिठाई बाप I think that means a container, dona. क्यों मानो गोपियों की कान कैसे हो गया? The gopis' ears are like नीचे की तरफ में बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए, कहीं नीचे ना गिर ना जाए, so it doesn't fall down. वेणुध्वनि की तरह इतने सुंदर, वेणुध्वनि ऐसे सुंदर है, वो पान करने लगे मधुर. So it's so beautiful, and they're just listening and taking और it, उनके drinking हृदय द्रवीभूत होने के नाते, अर्थात गायों के sound हृदय of the द्रवीभूत होने flute. के नाते, And with the और गाय cows, की आंखों से जो है आंसू टपक टपक the करके tears are flowing from झाड़ी निकल, the eyes of the cows. इतने सुंदर रूप, So beautiful, Govinda's बछड़े को, form गाय is को, वृक्ष लता आदि भी कहा. the cows, and they're speaking about the trees. तरुलता कैसे है? गोविंद वृंदावन में प्रवेश करने के साथ ही When साथ Govinda वृक्ष आदि enters अपने अपने Vrindavan, the लंबी लंबी trees शाखाओं के द्वारा, with शाखाओं के their द्वारा, long branches, गोविंद के आलिंगन कर लेते हैं. they embrace Govinda. एक सखा दूसरे Just as सखा से one मिलने पर जैसे आलिंगन one करते हैं, Sakha उसी embraces प्रकार the other वृंदावन के Sakha, वृक्ष आदि the देखो. friends when they meet, the same way और the गोविंद के लिए trees embrace पुष्प फल Govinda. आदि सब उपहार दे देते हैं. And they also लताओं के घर give नृत्य करना शुरू कर देते हैं. their leaves, their फूलों की flowers, पंखुड़ियों के द्वारा सारा वृंदावन the vines are सुंदर करके dancing. सजा दिया जाता है. and they decorate with the petals of the flowers. देखो ये देखो वरुलता तरवो वंजन्ति पुष्प फलाढ्या, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर. Srila Sukadeva वृंदावन Goswami की says वृक्ष लताएं कोई सामान्य नहीं है. they're not ordinary, the trees लताएं तो बस and आनंद में latas नृत्य करना and the शुरू कर देते हैं. vines of Vrindavan. The vines वृंदावन start के to क्या बोले, dance. वृक्ष के जो जितने भी पत्ताएं जो है, All the leaves of the trees, लिप्स, वो अपने आप ऐसे हिलना शुरू कर they देते just हैं start to जैसे मानो move गोविंद की हवा कर रहे हैं. as though they are fanning देखो कितने सुंदर Govinda. भाव उत्पन्न हो. Such a गोपियां कर रही beautiful थी वो. mood. चामर डुलाने लगे, But it's लताएं like they're fanning the chamar. वृक्ष में लताएं हो जाती हैं. So there's ऐसे vines ऐसे नहीं हो जाता एक साथ में. अपने आप tree, हिलना शुरू कर and they देते just हैं. start to move गोपियां कर रही हैं, ये themselves. लता नहीं है, The ये gopis are साक्षात मानो saying they are not चामर. vines, चामर they are खेत में chamars. गोविंद के They are इस प्रकार ये लोग आह्वान आदि कर रहे हैं. They are स्वागत welcoming कर रहे हैं. स्वागतम welcoming स्वागतम. Govinda. मम मन मंदिरे स्वागतम. हिरण आगे दौड़ने लगे, ये हिरणी आगे दौड़ने लगे, The उसके पीछे deer, the हिरण doe, the female deer, is running ahead, and then the deer is running behind. आकर्ण वेणुनोरितं सह कृष्ण सारा पूजा धूम विरचे प्रणयावलोक. देखो Look, इनकी दशा कैसी हो जाती. what is the state हिरण of हिरणी them? गोविंद के सन्निकट The सानिध्य में doe निकट and आ the जाते हैं. deer are really close to और Govinda. वो पशु जाति होने के तो बोल नहीं पाते. Being animals, they किंतु can't देखो कि speak. प्रेम प्रति कैसे आदान प्रदान होते हैं. But how do they express their love through गोविंद समझ जाते with their eyes? हैं. And और Govinda गोविंद understands, हिरण हिरण के पीठ पर and थपथपाते हैं. Govinda pats ऐसे them हाथ रख के on their थपथपाते हैं. back. और गोविंद के हस्त कमल स्पर्श प्राप्त करने के साथ And ही as soon as साथ they receive the touch of the lotus hands of Govinda, मेल्टेड. and then their hearts और साथ ही melt, साथ उनके आंखों से आंसू की धारा पड़े. and tears are flowing from their eyes. ऐसे गोविंद के This is सुंदर the deer रूप and क्या the doe. वर्णन करें. इसलिए कहते हैं विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा. दो अर्थ बता रहे. There's two कृष्ण सारी meanings. प्रकार के मृग होता है, हिरण होता है. There's a type of वो जंगल में deer रहता which है, is वो भी called जंगल में Krishna रहता Sara, है. जिसे कहा जाता है क्या है? which lives in the dense forest. हिरण. वो सूर्य के ताप सहन कर नहीं पाते. It can't tolerate the heat of the sun, so it lives in the dense forest. उसे कृष्ण वर्ण होता है. And it's dark complexion, Krishna Sara. अथवा कृष्ण सार दो अर्थ होता है. There are two meanings जीवन of की Krishna सार क्या Sara. है? What is सार माने एसेंस ऑफ लाइफ. the essence of और द life? एसेंस ऑफ लाइफ What कृष्ण is भक्ति. Krishna Bhakti? Is यदि the हम कृष्ण essence of भक्ति life. नहीं किया, जीवन के तात्पर्य क्या है? What is the purpose of our life if we don't do Krishna संपत्ति Bhakti? कमाया, We earn कुछ wealth, अपने खाया, कुछ अपने बेटा बेटी को दिया, eat, परिवारजन को give दिया, some to our समाज को children, दिया. to our family, to किंतु the साथ में community. क्या चीज करके ले गए? But what have we taken with us? हैं? What have we done? आए थे हरि भजन के लिए, We came for Hari Bhajan, किंतु कुछ नहीं किया. but we didn't do anything. हैं?
वो कोई दानी हो If someone's a donor, हो, if someone's a miser, कुछ नहीं। what can they take with them? What do they take? भगवान के लिए तुमने क्या किया? What did you do for the Lord? भगवान ने What did you do तुमको for भेजा Bhagwan? संसार Bhagwan में। sent you here. Lord sent you here to the world. आए थे हरि भजन के लिए, You came for Hari Bhajan. उठने लगे कपास। भगवान इस संसार में किस लिए भेजा? Why did the Lord send us here? To do bhajan. ऐसे सुंदर शरीर दिया, मनुष्य Gave शरीर us किस such a लिए दिया? beautiful भगवान की भजन form करने। of और भगवान की human. सेवा नहीं किया, And if we didn't serve the Lord, then what's the point? बन गया तो हीरो, किंतु We अंतिम में मिला became a hero, but in the end we became बन zero. गया हीरो। Became a hero. इस संसार में लोग कहते हैं ये बड़े हीरो बन गए। So in this world people say, किंतु oh, वास्तव में he's तो a hero. कुछ नहीं है। But really he's nothing. पारमार्थिक दृष्टि में उसे कुछ नहीं है। So in भौतिक spiritual जगत में तो हीरो बन गया, ठीक है। eyes is nothing. क्या बन गया। In the worldly eyes, he's a hero. Or become, स्पिरिचुअलिटी क्या है? but in spirituality, there's no spirituality, so zero. जो कुछ भी कहे, हम क्या किया? Whatever we say, what did we do? भगवान के निकट क्या जवाब देंगे? What answer will we give ये to the तुमको मैं Lord? भजन, तुमको मैं जो भेजा था, तुमने So क्या Lord किया? says, I sent you here. मैं What did मकान you do? बनाया, I made a बेटी बेटे house. के पढ़ा लिखा पढ़ा सिखाया, बेटी के विवाह दे दिया, बेटा को इंजीनियर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। I raised my children, तुमने क्या किया बताओ? married them off, and etc. But what did you do? क्या चीज लेकर के आया तुम? The Lord said, what did you bring? अरे कुछ नहीं। He says, बोल के nothing. जाओ, He was like, oh, वापस भेज देंगे संसार। go, we'll send you back into this world इसलिए again. कहते हैं आया थे हरि भजन के। That's why they say, came for Hari Bhajan. इसमें कृष्ण सार, So Krishna जीवन की said, सार क्या है? what is the essence of गोविंद life? की सार कर ले। यदि गोविंद भजन नहीं किया, If we didn't do Govinda Bhajan, then जो there's भी nothing. जितने भी जो कुछ भी कर ले सब बेकार चला Whatever we do, it's useless. है। आज Do you understand? तो कृष्ण सार, इसलिए गोपियां भी उसी प्रकार So गा रही हैं। Krishna देखो saw the gopis are saying in the same way. धन्नासो मुड़गत हिरण्यता जानो वत विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम स कृष्ण सारा पूजा दुहं ब्रज प्रणयाम लोकई। और वो देखो पशु जाति होने के नाते हिरण्य Even being गोविंद के an साथ animal कैसे form. प्रेम को कैसे आदान प्रदान करे, बोले आंखों के द्वारा। See how they are expressing their love to Govinda through their eyes. गोविंद समझ जाते हैं, So Govinda भाषा भी understands. गोविंद है, Govinda understands all गोविंद सारा भाषा को languages. जानते, सब कुछ जानते हैं। He knows everything. गोपियां कह रही हैं देखो हम The लोग gopis are saying, स्त्री जाति होने के नाते हम तो By गोविंद के निकट being जाने women, we cannot go close to गोपियां Govinda. यही महाभाव दशा में कहती So in है, the Mahabhav हे Dasha विधाता, state, हे, they're saying, hey इस Lord, शरीर के द्वारा गोविंद प्राप्ति होना संभव नहीं है। it's not possible for us to obtain इस शरीर को Govinda छोड़ in this करके body. हम We हिरण want होकर to के जन्म लें, leave this body तब and गोविंद take birth as a deer, निकट हम and then we can come जा सकते। close to Govinda. इसी का जा तिर्जग जनी प्राप्ति लालसा। This is called Tijjani Prapti लेकिन Lalsa. मनुष्य इतर मनुष्य छोड़ करके So they want to और leave जन्म में their जाए human तो गोविंद की प्राप्ति body अति सहज हो जाए। and go into another बाधा नहीं form, such as an animal, so they'll have अनंत कल्पत्ते खनत्त, have no obstacles in meeting ये Govinda. सब महाभाव दशा की स्थितियां कहा जाता है। These are all symptoms of Mahabhav. कहाँ Do you तक समझ में आए? understand? Where will you understand up to? असन्न जनता हित विडोलन, इनकी जब प्रेम की दशा में ऐसे विरह स्थिति हो जाता है, So सबके हृदय को क्या करते, आलोड़न विडोलन करते, वारपुल कर देते। in the state of love, when this is the position that they reach, आत्मविस्मरण प्रेम की ऐसे महाभाव की दशा में आ जाता है, अपने भूल प्रेम। जाते हैं, ना तो रमन ना हो रमणी, So they forget who they are. कि so मैं रमन हूँ कि रमणी हूँ, am आई I एंजॉयर और एंजॉयी, am I enjoyer or enjoyee? Forget, completely forget. है। ये वेणु गीत कोई साधारण नहीं, सब महाभाव This is not ordinary Venu गोपियों Gita. की भाव इसमें वर्णन हो रहा है। So Mahabhav moods in this. एक एक उदाहरण के द्वारा Ujjwala Grantha इसके gives वर्णन करते जा रहे an example of हैं। each ये of कोई these. साधारण वस्तु नहीं It's not ordinary. है। चलो हिरण की दशा वर्णन करते हुए फिर करने लगे, देखो Well, speaking about ये the तो deer, they say जीवात्मा है,
This इनके is प्राण है। this is किंतु a देखो live नदी Atma आदि के दशा Jivatma. देखो। But look at the तत्तदवधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्ष्मी तो मन भवभग्न वेगा। but look just सार दो अर्थ होता है। ये सब महाभाव दशा की तिथियां कहा जाता है। these are all Mahabhavs. हाँ तो समझ में आए। आसन्न जनता हित विडोलन, इनकी जब प्रेम की दशा में ऐसे विरह स्थिति हो जाता है, सबके हृदय को क्या करते, आलोड़न विडोलन करते, वारपुल कर देते। Then and they are in deep separation. Then प्रेम की their hearts are in a ऐसे whirlpool. महाभाव की दशा में आ जाता है, अपने भूल जाते हैं। ना सो रमन ना हो रमणी, दो पोस्ट When they पेशल forget एक अलग जाते। themselves and they don't कि know मैं रमन हूँ कि रमणी हूँ, if I am I am enjoyer or enjoyee, the enjoyer or the enjoyee. भूल जाते Completely forget this. हैं। ये वेणु गीत कोई साधारण नहीं, सब महाभागवती गोपियों की भाव इसमें वर्णन हो रहा है। All the उज्जवल deep मणि ग्रंथ में moods एक एक उदाहरण के द्वारा manifested in this. इसके वर्णन करते जा by रहे हैं। एक साधारण one वस्तु। example from चलो Ujjwala Neelmani हिरण की दशा वर्णन करते हुए manifested फिर in कहने her. लगे देखो Speaking about the deer, ये तो जीवात्मा है, इनके and प्राण this is है। a living किंतु देखो entity. नदी आदि के दशा देखो। But look at the state of the तत्तदवधार्य rivers. मुकुंद गीतम आवर्त लक्ष्मी तो मन भवभग्न वेगा आलिंगन स्थगित उर्मी भुजैर मुरारी गृह्णन्ति पाद जुगलं कमल उपहारा। गोपियां इस महाभाव स्थिति में कर देखो। The gopis are saying नदियों के in this दशा देखो। Mahabhav state. Look at the मानसी गंगा। state of Manasi Ganga ब्रज में in मानसी Braj. गंगा की देखो Look और at Manasi Ganga. जमुना आदि के नदी के देखो Look कैसे at the river of Yamuna, the state of Yamuna. मुकुंद गीतम गोविंद की वेणुध्वनि सुन करके Listening to the sound of the flute of नदियों की स्थिति Govinda. कैसे हो। Look at the state of the rivers. नदी के जल नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित The water comes देखो from the top to गोविंद की bottom. वेणुध्वनि सुन But करके as soon as it जल hears नीचे की तरफ नहीं जा रहे, the वारपुल हो गए। sound of Govinda's flute, it's not going down, it's coming to a whirlpool. आवर्त लक्ष्मी तो मनो भवभग्न वेगा। गोविंद की एक तो सुंदर रूप और साथ ही साथ The beautiful form of Govinda and also the beautiful sound of Govinda's flute. अप्लुत कर देता है। ये वेणुध्वनि की कथा क्या वर्णन करें। What can we speak about this Venu, ये वेणुध्वनि कृष्ण के this वेणुध्वनि sound of Krishna's के पहले flute? पृथ्वी लोक के पार करके चले गए, स्वर्गलोक में गए। So स्वर्गलोक में देखा past, तो यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। went past Prithvi Lok and went to heaven. No one wants to listen. पराएं जो है So the damsels देव सेवा आदि के who in Swargalok, और वेणुध्वनि वेणु के ऐसे ध्वनि जो है उस ध्वनि के सुनते ही वो सब तो अस्पराएं की हाथ ऐसे क्या बोले। as soon as they heard the sound of the और जितने flute, पुष्प वो लोग चयन the किया था, damsels, and they were collecting flowers. श्रेष्ठ पुष्प क्या है? पारिजात पुष्प का। पारिजात पुष्प आप What देखा? is the topmost flower? Parijata Pushpa, Parijata flower. And they were collecting the flowers, but they started to tremble. चयन कर रही थी, सुन रही थी। So they were picking these flowers, Parijata Pushpa, पहुंचते ही वो Parijata. देवियां क्या हुई? And माने then अस्पराएं जो है the damsels, उनका हाथ कपने लगे their hands और started कांपते to साथ ही tremble, साथ सब पुष्प and the जो चयन किया था flowers they'd picked, और सब पुष्प नीचे आकर के गोविंद के ऊपर ही मानो they started to shower वर्षा करना शुरू कर on दिया। Govinda. प्यारी लाल The flowers that they had picked as their hands were trembling started to shower onto Govinda. आगे के जो है ब्रह्मलोक के पार करके चले गए। And going past Brahmalok, then past Shivalok, then after Sadashivalok to Vaikunthalok, Dwarika to Mathura. और द्वारिका के ऊपर मथुरा, Above मथुरा that, के ऊपर गोलोक, और गोलोक के ऊपर Golok, वृंदावन। and after that Vrindavan. देखो कैसे ही भाव। Look at this जहाँ पर वो mood. भी जाकर के कहाँ प्रवेश किया? बोले So where गोपियों के did it- कान में प्रवेश किया। Where did it enter all the way? और गोपियों के कान में Into the जाकर ears of the के गोपियों के gopis. हृदय में जो महाधन जो छुपा हुआ था, To the
the great wealth in the hearts of the gopis, और उसके प्रेम धन को that the wealth of prem, the sound of the flute stole the wealth and brought it out. जितने बड़े-बड़े रसिक लोग होते हैं, कहते हैं गंधर्व लोक में सबसे बड़े रसिक these all उनके नाम है the rasiks, the great rasiks. So the Gandharvas, the topmost Gandharva, उसके नाम होता है, वो भी समझ नहीं पाते. Even they don't understand. वेनु-धरी के जो है सुन करके उनके भी चित्त विचलित हो जाते हैं. Even their heart is restless by listening to the sound of Govinda's flute. How can we speak of this, the sound of the flute? The sound of the flute just anything that is moving, it becomes still. Anything that is still starts to move with the sound of the beautiful flute. This is the sound of the flute. As the So the water of the rivers was moving, but then what happened? It started to whirlpool. As soon as it heard the sound of the flute, the Manasi Ganga, the Yamuna, what happened? As soon as they heard, they're listening to the sound of the flute, and they're speaking about the rivers, the state of the rivers. So it didn't, the water didn't move ahead, it just started to whirlpool where it was. It didn't want to move ahead. Where will it go? By taking darshan of Govinda's beautiful form, and also listening to the sound of Govinda's flute. Govinda has such a beautiful form, what can we say? Can we speak? And the Rasikacharya say, Krishna, you're in the form of a purush, so of a male, but if Lord had given you, if you had the form of a woman, then so many would be after you. So many would commit suicide to obtain you if you were in the form of a woman. Just for one woman, so many men commit suicide. So, sorry, I'm just seeing who said this. Okay, it's some Rasikacharyas are saying this. If you were a woman, then many would give their lives for you. So just for one woman, many men give up their lives. It's better that you are a male rather than a female. If you were a woman, Govinda, because you're so beautiful, so many will be after you. That same Krishna took on the form of Mohini. Everybody was after him. Everyone's captured by his beautiful form. So that's why they're saying
First of all, Govind's beautiful form, and then the sound of his flute. So the gopis are expressing their moods. In Alankar Shastra, it is said. So when imposing a mood upon another, so imposing one mood on the other. तो उसमें कह रहे हैं देखो गोविंद, so saying, गोविंद के वेणुध्वनि इतने सुंदर, how beautiful the sound of Govinda's flute is. इसे कहते हैं आवर्त लुप्सित भवभग्न वेगा। एक तो गोविंद के रूप दर्शन करके मानो नदियां की जलधारा आगे नहीं जा रही। By taking darshan of Govinda's beautiful form, the water is not moving ahead, it has stopped. भालो ये नदी में रहे अथवा नहीं रहे, गोपियों के अपने भावों को अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और दूसरी बात है, the gopis are expressing their moods. Everything in Vrindavan is conscious beings. क्या बताया? They are conscious beings. से लेकर के और सब क्या है? भूमि चिंतामणि गणमें तों अमृतम कथा गानम नट्टं गमनोपि वंशी प्रिया। Because of our material mind, we think in a material conception. But there is no unconscious being. Everything is a conscious being. In Vrindavan, from the dust, everything is conscious being. There are three. There's difference in conscious and unconscious. So what is the difference? So there are three things: feeling, willing, and knowing. Power in conscious being. This is not in unconscious. So anything that is in Vrindavan, they have these three: feeling, willing, and knowing. Just go to Vrindavan and then see. Have you been to Vrindavan? You haven't been to Vrindavan, you haven't seen. You will have to go there. You haven't seen Vrindavan yet. There's a net of Maya over Vrindavan. By doing bhajan and listening to Hari Katha from the lotus mouth of Sant Mahatma, your heart will be purified, and then you will see the transcendental Vrindavan. You haven't seen Vrindavan yet. What will we see with our material eyes? What is the difference between the dust of this place and the dust of Vrindavan? What will you see? You won't see anything. But as you do bhajan, and with the mercy of Guru, Vaishnava and Bhagwan, you will take darshan. Without their mercy, we won't be able to see, won't be able to take darshan. सनातन गोस्वामी पाद के बोले कि आप तो संत महात्मा हो, मैं बहुत प्रसन्न हो गया. The difference between the water of Vrindavan and the water of this world, you won't see a difference. But just with the mercy of Guru Vaishnavas, you will take darshan of Vrindavan. Without their mercy, we cannot take darshan. सनातन गोस्वामी पाद के बोले कि आप तो संत महात्मा हो, मैं बहुत प्रसन्न हो गया. Someone came to Vrindavan and said to Sanatana Goswami, I want to serve. मैं तो राजा हूँ, सम्राट हूँ. I'm a king, an emperor. मैं वृंदावन की सेवा करना चाहता हूँ. I want to serve Vrindavan in some way.
Sanatana Goswami Pad said, what seva will you do? This is in a transcendental place. No, please tell me. I can plant 10, 20 trees, make a beautiful gardens. Many big ministers come and they want to do this. Politicians, oh, I'll do something here. Sanatana Goswami Pad said, if you want to serve Vrindavan, he said yes. If you go below Yamuna, by the Yamuna, there's a broken brick at the corner of the bank of the Yamuna. And then he was thinking, oh, you're joking with me. How much does it take to actually repair the corner of a broken brick? I'm saying you're laughing, you're joking with me. And he became angry. He said, have a look at least, Sanatana Goswami Pad said, and see how much it will cost. So as he was about to look, then Sanatana Goswami Pad put his hand on the head of the king, and he looked. Even if he spent millions of rupees, he will not be able to repair the corner of that broken brick. There were so many jewels there. The land of Vrindavan is a wish-fulfilling Chintamani. In Brahma Samhita it says, we think we can serve Vrindavan, what seva will we do? We won't be able to serve. We need to pray that please accept our service. We can't serve. We have to. Completely insignificant. We are completely insignificant. How can we can't serve? So we need to pray to say, Lord, accept this item that you have given to us, and please accept it. And with that sukriti, then you will get sadhu sangha. So not through arrogance. So we say we served. I was listening to Gurudev's katha. They were asking about Vishrambhena Guru Seva. And Gurudev gave a beautiful answer. Gurudev said Vishrambhena Seva can only be done who has left everything and completely surrendered into Guru. There's no difference. Narayana Goswami Maharaj said, when I left everything and came into the lotus feet of my Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, I said to my Gurudev, the love and affection I had for my wife and children, everything that I have, I am offering this into your lotus feet. This is in YouTube. You will start to cry, you'll have tears. Prem Prayojan is asking this. What is called Vishrambhena Seva? It's a beautiful answer given by Gurudev. If you're like me, then you can do Vishrambhena Seva. Can't just do it like this. Half by.
आधा उधार आधार गुरुदेव के प्रति नहीं होता है। You can't गुरुदेव give कार्य yourself half to मैं जैसे Gurudev and half संपूर्ण रूप से not. गुरु में अपने को समर्पित कर You दिया need to और अपने जो कुछ completely विचार surrender गुरुदेव में yourself समर्पित कर दिया to Gurudev. तो अब गुरुदेव ने हमें अपने सेवा में लगाया। अब तो I completely surrendered, and that's how I served my तुम लोग हमारे Gurudev. पास आए हो। And that's how you've come to me. बोला This is what हमारी कथा Gurudev जो was सुन रहे saying. हो, जो कुछ भी कर रहे हो, हमारे प्रति जो What हमारे प्रति you स्नेह listen प्रेम to वृत्ति my रखते हैं, katha, ये whatever you're कारण क्या है? doing, what is the reason behind all ये this? सेवा Guru Seva. विश्रम्भेन Vishrambena Guru Seva. है? अपने को कुछ नहीं रखते हैं, माने You don't keep मेरा anything for नहीं रहता है। yourself. There's nothing that's yours and mine. It's not separate. गुरुदेव के संचरण में अपने के ही सब कुछ Everything is Gurudev's. Everything is offered to Gurudev. होता है। जब Does this होता है, happen? When does this happen? पढ़ना उसको Then बार you बार know. पढ़ उसको सुनना YouTube में जाना। Listen on YouTube ये again लोग and तो छोटे again. छोटे आजकल क्या बोलते हैं? What do you क्या बोलते हैं say? इसको? Instagram. इंस्टाग्राम बोलते हैं। छोड़ देते हैं ना। शॉर्ट जो है 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए 2-second shots on there आप रो on पड़ोगे। Instagram. You will cry. प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुदेव के मॉर्निंग वॉक में In the morning walk, प्रश्न पूछ रहे हैं he's गुरुदेव हमें asking बताइए this question. विश्रम्भेन गुरु सेवा Gurudev, tell us about Vishrambena Guru पढ़ना Seva. याद करके पढ़ना You have to read this. Remember to listen. हैं सुनो Listen. सुनो पढ़ो और उसमें Read. वो दे देते हैं क्या बोले सबटाइटल भी देते There are subtitles हैं there as बहुत well. सुंदर लगता It's very beautiful. है तो हम तो इसलिए कर रहे हैं देखो गोपियां कर रही हैं That's why they're saying, the gopis are saying, नदी की अवस्था देखो look at the state of the rivers. नहीं है नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपरागित दिव्य वृंदावन में सबसे चेतन धर्म है Everything is conscious being in. जल में भी चेतन है चेतनत्ता है बालू का नाम भी चेतनत्ता धर्म है Even the dust is conscious. आज इसे तो ब्रह्म संहिता ऐसे अपूर्व ग्रंथ है ब्रह्म सिद्धांत संहिता ग्रंथ कहा गया Is Tattva Siddhanta. चिंतामणि गणमयि तवं अमृतं कथा गानं नाट्यं गमनोगी तथापि गोपियां इस शब्द के कार्य देखो The gopis are saying, हम लोग के सौभाग्य नहीं है नदियों This के is देखो कैसे सौभाग्य not in our good fortune like the rivers, नदियों के कार्य ये वृंदावन की नदी like the rivers and sarovars of Vrindavan, सरोवर द पॉन्ड the ponds. वो लोग भी कैसे है What are they like? कोई साधारण नहीं They're not ordinary. है आगे जाकर वर्णन करेंगे We will discuss as we go ahead. देखो गोपियां कहते हैं वृंदावन की The gopis are saying, क्या बोलते हैं सरोवर सरोवर समझते हो the पॉन्ड ऑफ ponds of Vrindavan, है लेक और जिसमें सुंदर सुंदर कमल आदि अनेक प्रकार पुष्प आदि खिले हुए हैं where there's many beautiful lotuses and many beautiful flowers. गोविंद के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके When they take और सब darshan कैसे and they आनंदित see फलित हो रहे हैं Govinda's beautiful form, they are so happy. The gopis are speaking of this. क्या बोलते हैं इसको What is this called? अविद्या भाव अपने Avidya भाव को bhav. गोपन करके दूसरे के ऊपर आरोप करने के नाम है They're hiding their अविद्या own भाव का है। mood भाव को and है। they are actually विरह अवस्था में ये सब हो जाता है अपने को नहीं बोलते हैं मेरे पास है then they're enforcing it on some another. जो कहा जाता है क्या भाव बताया अविद्या भाव लिख करके रखो So avidya bhav. 1000 बार बोलते होते थक गए I've spoken 1,000 times and you'll forget, so अविद्या make sure you भाव write it अपने down. भाव को गोपन करके दूसरे के ऊपर जो आरोप करना है उसे कहते हैं अविद्या भाव कहा जाता है So to actually impose this mood on someone else, but to hide it, your own mood. This is what the gopis are doing. They're speaking about the ponds and the rivers. They're imposing their mood, but hiding. Look at them, the trees, the mood, and look at their good fortune of the trees. Look how they are shedding tears by taking darshan of Govinda's beautiful form. They are remembering their ancestors and being happy and very happy. Just as in a dynasty, there's a great person and everybody in that dynasty considers their good fortune.
if you have कुछ नहीं है तुम्हारे साथ। you have ना no देखा, ना सुना, relationship with the तो Prime तभी गर्व आ Minister जाता Modi, but you're saying, oh, I'm from Gujarat, so you're really happy, saying, oh, wow, look. है। हम But you have no गुजराती है, relationship with him just because he's अब तुम Gujarati. गुजराती होने And के you are नाते, Gujarati. हैं, तुम कहते हो देखो, You're saying, हैं, हमारे हैं, हमारे घर वाले भाई उसके साथ कोई संबंध नहीं है, बाहर चले जाते हैं ना। you have no relationship प्रधानमंत्री with कौन him. है? हैं? मोदी, हैं? नरेंद्र मोदी। पर वो कौन है? Narendra Modi is the अरे Prime Minister of गुजराती, India. और He's गुजरातियों के Gujarati. संग हम अपने And then घर the को रखते हैं। Gujaratis are माने really उनको happy. देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, They've नाम never के seen संबंध है। him, never heard. पर यही होता है। But this is what happens. तो उसी प्रकार In the गोपियाँ same way, आरोप कर रही है। the देखो, gopis are saying, ये वृंदावन की ये Look. बंसी कहाँ से निकला हुआ है? where has this बांस। flute come from? और बांस कहाँ The से आया? bamboo, where has it come from? बांस Of की the तरफ से। बांस flute. है वृंदावन की जमुना की किनारे से आया। It has come from the bank of the और ये Yamuna. बंसी ध्वनि सुन करके And when you listen to the flute, और the ये sound of the flute, नदी अथवा सरोवर के जल the rivers and the ponds are पेड़ आदि। बोले getting हमारे really, बंसी नहीं आए हैं सब। really happy because अपने it's from बंसी their की गरिमा दिखा dynasty. रही है। So that's why they are so happy and joyous. देखो कैसे कहा है, इसे उत्फुल्ल हो रहे। भागवत इसमें श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं, कल बताएंगे इस श्लोक को। We'll speak this shloka is in the Srimad Bhagavatam. We'll speak about it देखो tomorrow. Listen, ये लोग भी Look. प्रसन्न हो रहे हैं। they're really जैसे happy. किसी कुल में कोई विद्वान व्यक्ति आ जाए, Just ऋषिक as वैष्णव आ जाए, a Rasik Vaishnava महान comes व्यक्ति into आ a dynasty. जाए, उसके कुल के सभी लोग उससे So in that dynasty, everybody is so तो happy, उसी प्रकार so proud. ये बंसी In the कहाँ से same निकले way, हैं? where has the Vamsi come बांस from? से। बांस From से the तो जुड़ा है। bamboo. और बांस Where the bamboo has come from? वृंदावन की यमुना की किनारे में ही तो बांस पकड़े। The bank of the Yamuna in Vrindavan. बांस कहाँ से निकले? बांस। और ये यमुना की जल And the पी water करके, of पानी Yamuna. पी करके बंसी इतने So that's how the ये Vamsi संबंध हो has, गए। कहाँ कितना दूर संबंध है? by drinking the water of the Yamuna. Look how far this relationship is, but अपने they're लोग कह रहे हैं, saying, देखो है कितने प्रसन्न। look how जैसे happy किसी they को are. है और उनके आंखों से आंसू आ रहे And they have tears in their हैं। eyes. गोपियां कह रही हैं, देखो The gopis are saying, ये वृंदावन की सरोवर की दशा देखो। look at the state of the pond of बंसी Vrindavan. ध्वनि सुन करके ऐसे आनंदित हो रहे हैं। They are so happy listening to the sound of जब the आप प्रातः flute. काल में In the morning, भ्रमण करने के वन में भ्रमण करने के लिए जाओगे ना, वन भ्रमण करने के When लिए you go जाओ, आप out देखोगे कभी into कभी the ना forest, है, पेड़ के पत्ता से जो है पानी टपकते रहते हैं, you'll see that there's water dripping from the leaves of the trees. तो गोपियां उसे कहते हैं, देखो इसमें gopis आनंद are saying, आनंद के उससे प्रवाहित कर रहे हैं। अर्थात गोविंद के वेणुध्वनि They are सुन so करके happy, ये which पेड़ is why पौधे सोचने लगे these ये trees बंसी बांस are तो हमारी thinking कुल का ही है। that this आनंद bamsi, गरिमा this bamboo is from our प्रकाश dynasty. करता है। So they are so happy. सुंदर भाव। What a beautiful mood. नदी के देखो Look at the rivers, their इसकी mood. कथा मैंने श्रवण कर उस दिन बताया था। I told you about this the other day. आलिंगित स्तुगितो भू उर्मी भुजै मुरारी। और वो नदियां क्या करने के लिए बड़े बड़े सुंदर What सुंदर are the कमल को lakes doing? लहरी के द्वारा उठा करके और Lifting गोविंद के चरण में the lotus flowers and then placing them at the lotus feet of Govinda. क्या देंगे हम? What can we give to Govinda? Have we got anything we can give to Govinda? किंतु देखो But ये listen, जमुना but नदी look, क्या करने लगी what is Yamuna doing? है? Or Yamuna River? और उन्हें सुंदर सुंदर जो कमल जो खिले हुए था, All these lotuses that are उस कमल को bloomed, मानो अपने अपने क्या लहरें के द्वारा with the waves, चरण में अर्पित bringing it to the lotus feet of Govinda. और गोविंद प्रसन्न हो जाते And Govinda is so happy, so pleased. पदयुगलं कमल उपहार। इसके कहते हुए देखो ये तो जल की स्वभाव से दिखा है। और दूसरी कथा सुनो, This आकाश is में from बादल की the point of view of the water. And then the next katha is about the clouds. So beautiful, the kathas. ब्रज पशून सह राम गोपै संचारणम अनुवेनु मुदिरंतप
प्रेम प्रविद्ध उदिता कुसुमावली भी सखुर व्यधार्थ सबपू संभूत आपत्पत्रम। देखो अरे सखी, ये नदियों के तो हमारे वृंदावन की वस्तु है? किंतु देखो आकाश में बादल तो हमारे पास नहीं है। These rivers are from Vrindavan, but look at the clouds above. Look at the state of them. When Govinda goes to herding the cows in the heat, to serve Govinda, the clouds, they come as an umbrella above Govinda. So the clouds, as like an umbrella, are covering Govinda wherever he's going. So in the intense heat, Govinda is not too hot, because in the heat, in the summertime, it's intense heat. So they're like an umbrella, the clouds are like an umbrella over Krishna. One day, Nanda Baba said, why are you going out to do Gocharan? And I'm a king, I've got so many servants, and you are a prince. And you don't need to go out to herd the cows. And Krishna said, no, I am from the cowherd dynasty. So what is our nature? We need to herd the cows. And the cows are our mother. And it is my foremost duty to serve the cows. And said, Father, we have to follow our nature, our dharma. So whichever dynasty we've taken birth in, we need to actually to follow the rules. So if you're born in a Brahmin dynasty and you as a Chatterjee, but you're working as in a shoe shop, as like a shoemaker. So a shoemaker should do a shoemaker's job, and then a Brahmin should do a Brahmin's job. Do you understand? If you've taken birth in a Brahmin dynasty caste, then don't work as a shoemaker. Muchi, that's a shoemaker. By taking birth in a Brahmin caste, then you're not following the Brahminical rules, then you're not a Brahmin. If you go to India, go to Kolkata, there's Chatterjee. Chatterjee means Brahmin. Banerjee, Upadhyay, Mahopadhyay, they were Brahmin, high class Brahmins. And what are they doing? They're working as shoemakers. In the Gita, the Bhagavan says, so by the qualities, what karma they are doing, what activities they are doing. So if he's writing down he's a Brahmin, but he's working as a shoemaker. So the nature is bigger than the activity. So if you with the nature, the person is doing the activity. With the nature, then they do the activity, it's better. Do you understand? This is what Bhagavan says in the Bhagavad Gita. So first the qualities and gun. If
If you don't have the qualifications of a Brahmin, you won't be able to do the Brahminical activities. So it tells the qualities of a Brahmin and then the activities of a Brahmin. So it tells the nature, the qualities of a Shudra and the activities of a Shudra. So they're saying, look at these trees, look at the sky, look at the clouds, look how much love and affection they have towards Govinda. So when Govinda goes to herd the cows, the clouds are overhead like an umbrella, just as a Satguru is walking and a disciple is holding an umbrella over the head of him, their Satguru. So in the same way, the clouds are like an umbrella over Govinda. Okay, 2 minutes I will finish. What did I say? So as a Satguru is walking and the disciple is holding an umbrella. So the same way the clouds act as an umbrella. So when Krishna is going out to herding the cows, and then Nand Maharaj is saying, you are a prince, I am a king, and I have so many servants, they can herd the cows. You don't need to herd the cows. Krishna gives such a beautiful answer. He said, I took birth in the cow dynasty, and it is my duty to take care of the cows. I will go and herd the cows, Father. So our duty is to take care of Gomata, mother cow. Krishna said, no, I will serve the cows and herd the cows. So Nanda Baba said, how will you go in such heat? And Krishna said, we are. So our worshipful deity is Gomata, mother cow. So if we herd the cows, we can't wear shoes and herd the cows. So if we say there are hooves, the cows have hooves as shoes, so it can walk anywhere. It won't be affected by thorns, etc. And then Nanda Baba said, wear shoes. And then Krishna gave a beautiful answer and said, worshipful deity is mother cow. So first put shoes on all of the cows. There's 900,000 cows. So times 4 each cow. So we need 36,000 shoes. So we have a factory of shoes. So each cow have an umbrella as well. Where will you get an umbrella? So there's calves, cows, there's so many. How many umbrellas will we take? If you can't give, Krishna said, if you can't give shoes to the cows and you can't give them an umbrella, then I don't want an umbrella and I don't want shoes. But to serve Krishna, the cows, to serve Krishna, the clouds, they act as an umbrella. And the wind is coming in the opposite direction, but the clouds are following ahead over wherever Krishna is walking. Above Krishna, the clouds are walking to act as an umbrella. They're not going ahead of Krishna.
So they're doing this for the service of Govinda. जैसे सत शिष्य होते हैं गुरुदेव के लंग करके आगे Just नहीं as जाते। there's a disciple, a sat disciple who does not go ahead of Gurudev. If Gurudev was walking and some brahmachari went off ahead, then Gurudev would hit with his danda. Never ever pass Guru Vaishnava and do parikrama. Those who pass Guru Vaishnava and go off ahead, start walking off ahead. They never do Vrindavan parikrama. Those who do not do Vrindavan parikrama under the guidance of Guru Vaishnava, they don't do Vrindavan parikrama. Anything you do under the guidance of Guru Vaishnava. Such a beautiful example in here. So those clouds are not going ahead of Krishna or Govinda, they are going above Govinda. Why are the clouds not going ahead? Who is Krishna? Is Jagat Guru. He is the Guru of the universe. If anyone surpasses him, so what will happen? Is parikrama will not happen. So it's better stay at home and remember Vrindavan. Should always do parikrama under the guidance of Guru Vaishnava. Some run off ahead. So if anybody comes off ahead, so used to get to the place when parikrama was happening and they'd arrive before Gurudev, and Gurudev used to get his danda and beat them. So nowadays everything is parikrama doesn't happen, and this is the truth. With no great personalities, everything is destroyed. Everyone thinks that they are bigger, they are bigger. No one wants to. They go off ahead. So it's like first go and do parikrama. So wherever they start parikrama, they go off ahead. They think I am bigger, but they're foolish. We need to be under the guidance of Guru Vaishnava. When Gurudev spoke about this, I'm not talking about myself. And then Gurudev used to beat them. Do you understand? Gurudev used to, and everybody used to go behind Gurudev. Not that, oh yeah, we're going to go off ahead in front of Gurudev. In Dham Parikrama, under the guidance of Guru Vaishnava, that means to go behind them. Do you understand? Some people, they come off and go off ahead and go home. That's not right. Completely out of control. No, this is completely out of control. It's under the guidance of Guru Vaishnava. No one's saying you can't do parikrama, but when no one's stopping you, but when it's actual parikrama, you need to go behind Guru Vaishnava. It's not in front of him. If we're going Bandirvan today for parikrama, not that you take 10 people with you and then go there and speak katha and then come back and take prasad. You need to go under the guidance of Guru Vaishnavas. So if anybody went off ahead, Gurudev would beat them with his danda.
There's no one to there's no one to chastise, and there's no one to accept the chastisement nowadays. But at the time of Gurudev, there was a very hard chastisement. Now the people करना नहीं है, जो कर लिया गुरुदेव के समय वही हमारी संपत्ति होगी, और करने की जरूरत नहीं। विशृंखला में क्या करें? So it's like whatever we did at the time of Gurudev, that is what was, that's our wealth, and now it's just if there's no not under the guidance, then read Venu properly. There's many beautiful moods of the gopis in this. What can we speak? Jai Jai Shri Radhe.